Honorable Deputy Speaker, Madam, we welcome the Governor's address to the Telangana State Legislature. It is the second such address of the Governor after the historic formation of the Telangana State in June last year. The Telangana government has completed 9 eventful months in office in the state. The first anniversary of the formation of the new state will be celebrated on 2nd of June. The Honorable Governor has reviewed some achievements of the new state since June 2014, beside reiterating the priorities, policies, programs and schemes of the TRS government under K. Chandrasekhar Rao Sahab's leadership for the development of the state and for the welfare of different sections of people in the last 9 months. We are fully aware that the state is going through teething problems, troubles, compounded by inadequate staff and delay in allotment of all India services officers, severe shortage of power, deficient rainfall, water scarcity, financial crunch, and other issues. The government has tried to tackle these problems. The governor's speech this time sounds very much like the first speech after the Telangana state formation in June 2014, because at different places, the governor continues to refer to the next 5 years. Though 1 year has almost over, he must have referred to the next 4 years, leaving aside the year that is coming to close. Though we would know the real state of state finances when the state budget is presented in the legislature on the 11th of March, we have been provided reassuring figures about the state economy growth during the current financial year. We were told that the GSDP growth for the fiscal 2014 and 15 would be around 5.3% with momentum in industrial and service sector. That we are told that the GSP growth of fiscal 2014 and 15 would be around 5.3%. With momentum in industrial and service sector that effectively offset the decline in agricultural growth due to adverse monsoon, the per capita income has crossed the rupees 1 lakh, and it is likely to be rupees 1,03,889 in the current financial year. This is a matter of satisfaction for our state. However, these statistics trotted out by the Director of Economics and Statistics could be tricky because these are the advanced estimates prepared by the officials, though the financial year would be over in next 3 months. The service sector and industrial sector, I'm afraid, have not grown at the rate indicated, and there have been negative growth in the agricultural front also. The Rabi crop has been affected due to fall in groundwater table and surface water availability owing to deficient rainfall. It is strange that the governor's address had no reference whatsoever to the raw deal being meted to the Telangana state by the central government, either under the 14th Finance Commission grants or under the union budget, even while ignoring the state government request for according special category status to Telangana state. The central government is curtailing central assistance for various schemes, and this is a very important issue which has not been addressed in the governor's address. Before I go into the specifics of the Honorable Governor's address, I would like to highlight some of the issues that would have long-lasting impact on the state finances in its budgetary spending in the 13th Finance Commission recommendation, as well as proposal containing the union budget for the 2015 and 16, presented by the Union Finance Minister Arun Jaitley in the Parliament, are going to adversely affect the Telangana state finances and its ability to implement the welfare programs and developmental activities. First, I would like to refer to the recommendation of 15th Finance Commission, which have been accepted by Union Government in toto. In additional terms to reference of 14th Finance Commission was to take into account the resources available to the successor states on reorganization of state of AP and make recommendation of successor states. However, the recommendation of the 14th Finance Commission with regards to Telangana state, AP seems to be weighted in favor of AP at the expense of Telangana state. At the expense of Telangana state. Based on the projection of pre-devolution revenue deficits
made by the AP state, the 14th Finance Commission has included AP among the 11 states for whom grant in aid to cover revenue deficit has been suggested. AP stand to get grant in aid of rupees 22,113 crores to cover its revenue deficit. However, no grant in aid for Telangana has been suggested on the ground the state is revenue surplus. No grant. And further, in 14th Finance Commission has suggested the cut in Telangana state share for central taxes, divisible pool from 2.91% to 2.48%. The AP share has been raised to 4.30%. This is unfair because the collection of central taxes and duties including corporation tax, income tax, custom duty, union excise duty, service tax, other tax and duties are far higher in Telangana compared to Andhra Pradesh. But still, and if I have to give the details, madam, the approximate taxes collected by the government of India from Telangana is approximately 40,000. Out of 40,000, the Telangana gets only 12,823. The taxes collected by Andhra Pradesh is less than 30,000. It's less than 30,000 and they are getting 22,638 crores. And if I have to give the figures of special grants recommended by 14th Finance Commission in various heads, that is basic grant, rural local bodies, urban local bodies, performance grant, rural local bodies, urban local bodies, state disaster response fund, SDRFs, central share, special grant, judiciary, demands for grants and aids. The total amount allocated for Andhra Pradesh would be 1,56,204.24 in next 5 years. And the share of Telangana in this would be only 31,286.82. Only 31,000. And the governor's address is quite on this important issue. And I would like to know when the Honorable Chief Minister is going to reply. What are the initiatives the state government is taking to the injustice that has been given to the state of Telangana? This is a very serious matter. So, and to go more further in this, the Telangana state also gets lesser amount towards basic grants and performance grants recommended for rural and urban local bodies as well as state disaster response fund and special grants for upgradation of judicial administration and all. AP works out to 1,69,969 crores in the total central divisible pool of rupees 39,48,187 crores in next 5 years. The share of Telangana is far less, not even 96,000 crores. This is a matter of serious concern for all of us. And I've been hearing all my leaders, but none has mentioned this serious issue, which needs to be addressed immediately. In the Union Budget 2015-16 presented by Union Finance Minister Arun Jaitley, in the Parliament, AP has been provided with rupees 22,638 crores towards its share of union taxes and duties. Telangana gets only 12,000. And under normal plan assistance, externally aided project, centrally sponsored scheme, apart from non-plan grants and loan, the Planning Commission has abolished and Niti Aayog has been constituted from 1st of January 2015. The TRS government has welcomed the formation of Niti Aayog. We have welcomed and this is what we have got. We need to address this issue. And an analysis on the Union Budget 2015 and 16 by central government for budget and governance accountability in New Delhi points out the deeper examination of amounts of increased devolution. 42% of the divisible central taxes recommended by 14th Finance Commission provides a clear picture of the status of overall resources being transferred to the state. The Union Budget categorically stated that due to higher devolution of taxes of the state, the normal central assistance, special plan assistance, specific central assistance, and additional central assistance for other purposes are included in 14th Finance Commission award itself. Thus, 8 schemes have been discontinued. 8 schemes. And some central sponsored schemes would be implemented with a change pattern of sharing resource with the state to contribute higher shares. Higher shares. The schemes to be discontinued by central include backward region grant funds. Backward region grant funds.
how many districts are backward and how many districts were getting the central assistance? And by this discontinuation, what will happen to the backward regions and the districts of Telangana is a question mark. And modernization of police forces will not get any funds. Rajiv Gandhi Panchayat Sastika Abhiyan will not get any funds. Scheme for setting up 6,000 model school, national mission on food processing, tourism infrastructure, national e-governance plan, and scheme for developing export infrastructure will get no grants from the government of India. So now the question is, I may point out that all the 9 rural districts of Telangana state are currently covered under BRGF. If the BRGF goes, what would happen to the schemes implemented in the 9 districts of Telangana? Is a question mark which needs to be answered. And what would happen to the other scheme for the opening schools, e-governance, modernization of police forces, etc. My friend of Panchayat Raj, Rural Development and IT Minister Mr. K.T. Ramarao must be seriously concerned over the scrapping of BGRF and e-governance scheme. This is a very serious thing. Moreover, the UN government would bear only capital expenditure of 24 central schemes, and the remaining expenditure would be borne by these states. These include schemes relating to cattle, horticulture, livestock, sustainable agriculture, Dairying Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Veterinary Services National Rural Drinking Water Program, Swachh Bharat Abhiyan in rural urban areas, Afforestation AIDS Control National Admission, National Urban Livelihood Mission, Rashtriya Madhvika Sakshi Abhiyan, Rashtriya Ucha Shiksha Abhiyan, National Rural Livelihood Mission, Housing for All, Integrated Child Development Services, Micro Irrigation, and etc. Thus the burden on the state for implementing all these central schemes would be much higher in view of precarious financial position of the Telangana state. The TRS government would be really hard pressed to find additional resources to meet the share of expenditure of these schemes. Most of the ministry, the department would find it difficult to implement these schemes in absence of adequate central financial assistance. I would like the Honorable Chief Minister, Mr. KCR Saab, and the Finance Minister, Rajendra Saab, to tell us how they are going to overcome these financial constraints and what would happen to various developmental programs and welfare schemes which were largely funded by the union government. All the major programs and schemes implemented by the state government are dependent on union government, and can the government give an assurance that these schemes would not be curtailed? Apart from these issues, the central resource transfer under non-plan and plan of the state, I would like to point out that the union government has been silent and on genuine and justifiable demands of Telangana state for special category status, higher quantum of central assistance, including a Paranahita Chavalla project as a national project, incentive for industrial development and grant for state schemes such as Mission Kakatiya and drinking water grid and mega power project, etc. Justice has not been done to Telangana state, either by the 14th Finance Commission or the union budget. I demand that we must exert pressure on the union government to give us a real deal under 14th Finance Commission grant, restore the allocation for central schemes and accord special category status to Telangana state. This is very important. I request the Honorable Chief Minister to move a resolution in this August House for increase of state share in devolution under 14th Finance Commission to provide adequate allocation for central schemes and confer the special category status for Telangana immediately. The governor has recounted various programs launched by the government for the welfare of disadvantaged sections. These include the increased allocation of SC, STs, BCs. The governor has reiterated the TRS government's commitment to the welfare of minorities, which continues to suffer from several constraints. Apart from allocation of rupees 1,000 crore in current year, the governor has assured that the government would earmark 1,000 crore every year for their welfare. The Shadi Mubarak scheme has been introduced to provide 51,000 assistance to minority girls and marriages. And then the governor has referred of Ganga Jamna Tehzeeb culture by pointing out that Telangana is strategically located in providing ideal ground for different cultures, religious belief as well as languages. The government has assured to preserve the diverse culture aspiring of the people, especially the minorities, to allocate adequate resources to the end of the state budget. The governor said that benefits such as scholarships, coaching for civil exam, etc. are being provided by a government
under multi-sector developmental program. A central scheme, comprehensive development is planned and blocked in preponderance of minorities in Nizamabad and Medak district. I would like to recall that out of the allocation of 15 crores for this scheme, rupees 7.5 crores have been released on January 5th this year, and the balance amount of 7.4 crores is to be released before 31st of March. The government has released rupees 437 crores for minorities. That is less than 50% of the total allocation for the minorities. So far, the finance department would need to release the balance allocation of 596 crores in next 3 weeks before the financial year comes to a close. We do not know whether the state's precarious financial position will permit the government to release the balance funds for the minority welfare before 31st of March. There are some outstanding issues with regards to various schemes. Before going into that, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि एससीज बीसीज के लिए, सब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए कमेटी बनाई गई, फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख खोली गई और सारे स्टूडेंट्स ने दरखास्तें अपनी डाल दी हैं एससी एसटी और बीसीज की स्कॉलरशिप्स के लिए, लेकिन आज तक भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की दरखास्त डालने के लिए अभी तक खोला नहीं गया. तो आखिर कब होगा और क्या इस साल होगा या नहीं होगा? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने बार बार एक ही मुतालबा करता रहा और आज भी कर रहा हूं. आप उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का सोचकर उनकी स्कॉलरशिप्स को न रोकिए. कॉलेज वाले उनको हरासा कर रहे, परेशान कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, एग्जामिनेशंस लिखने नहीं दे रहे हैं. लेकिन आज इन सारी सूरत हाल के बावजूद भी हमको उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे इन बच्चों के लिए. लेकिन आज ये सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और माइनॉरिटीज के लिए इतना बड़ा बजट देने के बावजूद भी 50% बजट भी रिलीज नहीं किया गया. तो इसमें किस तरीके से, जैसे कि स्कॉलरशिप्स है, फी रिएम्बर्समेंट है, फास्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा है. लेकिन माइनॉरिटीज के साथ वादे किए जा रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा. तो हमको उम्मीद है इंसाफ किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा यह सवाल है. कि 9 महीने में एससी एसटीज और बीसीज के स्कॉलरशिप की दरखास्तों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन माइनॉरिटीज का आज तक नहीं खोला गया. तो आखिर ये गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को इनवाइट कब करेगी? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फीस रिएम्बर्समेंट, रिन्यूअल ऑफ करंट एंड एकेडमिक एंड फाइनेंशियल ईयर, आखिर ये कब होंगे? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर आ रहा है. मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि फौरन आप एप्लीकेशन इनवाइट करने के प्रोसेस का आगाज करिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए. और वो कॉलेजेस जिनको फीस नहीं मिली है, जिसकी वजह से बच्चे और मैनेजमेंट परेशान है, उनके फीस की इजराई फौरन अमल में लाइए. तो प्रोफेसर कॉलेज स्टूडेंट्स को एडमिट करें कन्वीनियर कोटा में फॉर एससी एसटी एंड बीसी माइनर स्टूडेंट बिलो पॉवर्टी लाइन में. उनके फीस आज तक नहीं आए हैं. गाइडलाइंस फ्रेम करना है. कब गाइडलाइंस फ्रेम होंगे, कब होगा आखिर ये? हम हुकूमत से यह भी डिमांड करेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फीस रिएम्बर्समेंट फ्रेश रिन्यूअल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ करंट एकेडमिक ईयर वुड बी पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के आगाज से पहले आप इनके फीसेस की इजराई कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी. द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फ्रेश गाइडलाइंस and the target for providing subsidy on bankable loans for SC, ST and BC. However, no guidelines have been framed for the subsidy schemes for minorities. SC, ST, BCs के लिए guidelines हो चुके हैं, minorities के लिए नहीं हुए. तो फिर यह भी कब होगा, यह सवाल है. लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत का ताउन किया, उनके अलाई पार्टनर है, अपनी ताईद दी, तो फिर ये मुसलमानों के ये मसाइल आकर कब हल होंगे? हमें आज भी उम्मीद है, हम अपनी उम्मीद को नहीं खोए हैं. हमको उम्मीद है कि बराबर होगा, लेकिन सवाल यह है कि कब होगा. एससी एसटीज को खोल दिया गया, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ. और subsequently no subsidy on bankable loans is likely to be sanctioned during the current financial year, as no fresh applications are invited in absence of revised guidelines for minorities. Budget release are merely sufficient to clear pending sanction application pertaining to last financial year 2013 and 14. I would like the government to formulate the guidelines immediately and call for application for subsidy on bank loans. The target under Shadi Mubarak is unlikely to be achieved.
Though conditions are causing problems to applicants, these conditions needs to be relaxed. Moreover, madam, relax के साथ साथ 2 दिन पहले एक नया जियो आया. I don't know whether Honorable Chief Minister is aware of this. On 9th, one order has been issued by the Government of Telangana, Commissioner of Minority Welfare Telangana, press note. It says, all the Shadi Mubarak applicants who have registered online and having zero balance bank accounts are requested to convert zero balance account into saving bank accounts. Being zero bank account is not accepting for transfer of Shadi Mubarak amount of 51,000 at the time of their account. पहले बोले उनको एक अकाउंट खोलो, अब बोल रहे दूसरा अकाउंट खोलो, तो कैसे होगा? और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात पर भी लाना चाहता हूं कि गवर्नर साहब के एड्रेस पे 15 पॉइंट प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का है, जो बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं, इस ताल्लुक से एक लफ्ज भी नहीं हुआ. ठीक है, गवर्नर एड्रेस पे सारी चीजें आनी जरूरी नहीं है, बात चीजें छूट जाती हैं, लेकिन 9 महीने में एक मीटिंग भी हुकूमत की जानिब से 15 पॉइंट प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाई गई. मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब फिर 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आज अगर आप 1000 करोड़ देंगे या 2000 करोड़ भी देंगे, तो 2000 करोड़ को खर्च करने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है. आज बीसी कॉर्पोरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट में 2998 स्टाफ है, एससी में 8508 एम्प्लॉइज हैं, ट्राइबल वेलफेयर में 10607 एम्प्लॉइज हैं. टोटल ये 3 डिपार्टमेंट्स में 22,123 हैं. और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ 100 एम्प्लॉई हैं, सिर्फ 100. तो आप बताइए 100 से 1000 करोड़ कैसा खर्चेंगे? वो एक ही ऑफिसर को शादी मुबारक की इंक्वायरी करना है, वो एक ही ऑफिसर को स्कॉलरशिप की इंक्वायरी करना है, वो एक ही ऑफिसर को फॉर्म भी देना है. कैसे होगा ये? यही तो नाइंसाफियां हुई हैं कांग्रेस हुकूमत की जानिब से या फिर तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से. और इन नाइंसाफियों को इंसाफ में तब्दील होते हुए हमको उम्मीद है कि यहां आपकी हुकूमत में होगा, लेकिन आज वो चीजें भी नहीं हो रही हैं. The government has recently constituted a commission under the Commission of Inquiry Act for going into entire grants of issue relating to increase in reservation for Muslims to 12%. However, this fact has not been mentioned in governor's address. But we welcome this. When we welcome this, at the same time, one important thing needs to be addressed and understood by the government. An IS officer is deputed and given the responsibility of collecting the data. How can an IS officer do justice to this? आप अगर वाकई में अगर कुछ करना चाहते हैं, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाकर बनाइए उसका मेंबर, उनको जिम्मेदारी दीजिए. अगर एक हाई कोर्ट जज जिम्मेदार होगा तो लीगल इश्यूज के बारे में वो वाकिफ होगा, कानून में किस तरीके से हमारे इस मुतालबे को मनवाया जा सकता है वो ज्यादा जान सकते हैं. कानून में कौन सी कमजोरी है जिसको हमको दबाकर उसको मजबूत करना है, एक रिटायर्ड जज बेहतर जान सकता है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं कर सकता इस बात को. लेकिन एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को कमीशन में डाल दिया गया. मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं कि एक जमाने में पुट्टुस्वामी कमीशन भी बनाया गया था. पुट्टुस्वामी कमीशन 10 बरस तक इंक्वायरी कर रहे थे, 10 बरस तक. मैं उम्मीद करता हूं कि यह कमीशन फिर एक 10 बरस तक नहीं बैठेगा, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है वो देंगे. एंड ऑल्सो देयर आर इश्यूज विद रिगार्ड टू अदर स्कीम्स फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विडोज एज पेंशन एंड डिसेबल्ड पेंशन, persons who are yet to get the enhanced Asara pension. The government should have continued the existing pensions and enhanced assistance of 1,000 per beneficiary, take up scrutiny to weed out bogus beneficiaries. However, the existing pensions are scrapped and application of first pension under revised guidelines are invited. And this is causing problems, since the existing pensioners have been denied their meager pension of rupees 200 per month, while thousands of applications have been rejected or await scrutiny. Aged persons, widows and disabled persons have lost their existing pension, are running from pillar to post, awaiting fresh pension. Their plight is very pathetic and very sad. The government must restore pensions to all pensioners. And one more, unjust
which has been done to the minorities in the state of Telangana. शायद चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं, मेरी इन बातों को तनकीद की शक्ल में न लें, एक तामीरी तनकीद की शक्ल में लें. I mean to say that my criticism should not be taken as a criticism to the government, but should be taken as a constructive criticism. We are the friend of the government. But if you have to see the details, sir, Honorable Chief Minister, sir, the total life pensioners, and these are not my figures, these are the figures of the website. The total life pensioners are 30,76,892. I repeat, 30,76,892. And the share of minority pensioners in 30,76,000 is only 41,230. Out of 30 lakhs, only 40,000. हमसे लोग पूछ रहे हैं, आप हुकूमत की तायीद कर रहे हैं, और क्या मिला? शायद चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम. और अगर परसेंटेज देखते हैं, if we have to see the percentage of the total life pensioners, the percentage of minorities is 1.34% only. 1.34, sir. तो आप बताइए, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या इस पर इंसाफ का मुतालबा हम जो कर रहे हैं क्या गलत है? आज ये सारी बातें, बेशक हम जानते हैं कि आपको मसाइल हैं, आप हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं हालात को, जायजा ले रहे हैं, स्टाफ नहीं था, कई मसाइल हैं तेलंगाना के सामने, लेकिन ये नाइंसाफी जो हम आपके सामने ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पे इंसाफ हो. अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर वही होगा जो कांग्रेस और तेलुगु देशम वालों ने हम मुसलमानों के साथ किया. हमें उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे. Thousands of households have been left out under intensive household survey. Samagrana Kundama survey in state, particularly Hyderabad city, the household data is thus incomplete, causing problems in processing the application for pension, food security cards and other benefits. The leftover households were to be covered subsequently, but this has not been done, leaving the officials with incomplete data. The uncovered household run the risk of losing out on benefits under various welfare schemes. The survey must be completed for the leftover household. The food security cards to replace the ration cards are yet to be given to poorer families. The applications were invited months ago. The process of identifying the families for issuance of food security card is yet to be completed. Instance of linking the food security card with Aadhaar card is causing problems. This is causing problems. Unless there is 100% coverage of all residents, household under Aadhaar scheme, there is no reason to link these cards with the welfare schemes. While issuing the food security cards is unfair to leave out the members whose Aadhaar details are not available. This is a devious way of reducing the quantum of subsidy rice to poor families by deleting the names of members of those Aadhaar details are not furnished, raising where the quantum of rice to 6 kgs per capita has no meaning if the households are provided rice for only those whose names are linked in Aadhaar cards. I have the details. I'll give it the details of the budget speech. I understand that allocation and mark for a CST sub-plan have been fully released. The schemes for providing 3 acres of arable land to landless poor Dalit is yet to take off. The government must identify the beneficiary, acquire and assign the lands to them immediately. Please conclude. Madam, I just need 15 minutes more, madam. I request, madam. Sir, about this 3 acres of land to Dalits, it's a very good, we welcome that. 3 lakhs Dalits are there. 3 acres would be given. 9 lakh acre of land is required. We are spending money in purchasing the land to allot to Dalits. And again, the government has the plans on other side to sell the government lands. Sir, now I said I don't know how the government would do. I wish them all the best for this. But at the same time, I would like to make a request is that when you're giving this to Dalits, kindly give not 3 acres, at least 1 acre to a Muslim farmer also. Please do not forget them also. I'm not asking for 3 acres. I'm asking for 1 acre. And I hope that you would do this. The government has recently constituted an inquiry commission to go into the issue raising the reservation for STs to 12% of the state. This will help the government fulfill on a key
poll promises. I request the government to implement the scheme for providing pensions to weavers in Karimnagar and other districts and assistance to beedi workers in Nizamabad and other places. Beedi workers. काफी वो लोग एहतजाज कर रहे हैं. इसके लिए मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप एक मीटिंग बुलाएं. बीडी वर्कर्स की जब मैं बात करता हूं तो यह भी कहूंगा कि हुकूमत ने यह भी मुतालबा किया था बोधन शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक से. डीबीआर मिल बंद हो गई और हालिया अरसे में 4-5 महीने से सिरपुर कागज नगर की मिल भी बंद हो चुकी है. एचसीएल भी बंद होने वाली है कह रहे हैं. हजारों लोग बेरोजगार होंगे. इसके लिए भी हुकूमत को सोचना चाहिए. सिरपुर कागज नगर के वो लोग मिल के वो मुलाजिमीन परेशान हैं. वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो. कई हुकूमत साबिका हुकूमतों ने तो मिल्स को बंद कर दिया, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, उनके जमीनात को बेच दिया. उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा. द गवर्नर एड्रेस में यह बात पर भी खामोशी है. हम अखबारात में पढ़े कि सेक्रेटेरिएट शिफ्ट होगा, चेस्ट हॉस्पिटल को जाएगा. गवर्नर एड्रेस में उस पर भी कोई बात नहीं की गई. नया बनता है, बहुत अच्छा है. एक ऑलिव ब्रांच दी जा रही है आंध्रा के लोगों को. एक आंध्रा के लोग जो कुकटपल्ली और उस एरिया में रहते हैं, उनको यह पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी हुकूमत आपके साथ भी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में आएगा तो आंध्रा के लोगों को बहुत फायदा होगा. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, होने दीजिए, करना चाहिए. चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा कि सेटलर भी नहीं पुकारना चाहिए. बहुत अच्छा है, करिएगा. हम आपको मुबारकबादी देते हैं कि आंध्रा के लोगों के बारे में आप इतना सोचते हैं. एक वक्त ऐसा भी था कि आंध्रा वालों को जाने की बात कही गई. अब यह वक्त भी आया है सुनहरा तेलंगाना में कि आंध्रा वालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट चेस्ट हॉस्पिटल में ला रही है. बहुत अच्छा है, हम इसका खैर मुकदम करते हैं. इसके साथ एक छोटा मुतालबा करते हैं. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चे जो तेलंगाना एजुटेशन में बहुत एहतजाज करे थे तेलंगाना को हासिल करने के लिए, 2009 से वो मेस चार्जेस नहीं दिए हैं. 7 करोड़ है साहब उनके. ओनली 7 करोड़. Only 7 crores are the mess charges which are due by the students of Usmania University. Kindly waive that this 7 crores, sir. Kindly waive this. तो एक तरफ आंध्रा वाले भी खुश होंगे, तेलंगाना एजुटेशन करने वाले तेलंगाना के बच्चे भी खुश होंगे. अच्छी बात है. इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप चेस्ट हॉस्पिटल को, अगर शहर हैदराबाद में जमीन नहीं है तो पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल को लेकर आइए. हम जमीन देंगे, हमारे पास जमीन है, यहीं पर रहने दीजिए हैदराबाद में चेस्ट हॉस्पिटल को. वखाराबाद में हॉस्पिटल है, वहां पे एक रहेगा. ये कुकटपल्ली का हॉस्पिटल को पुराने शहर में लेकर आइए. हम जमीन आइडेंटिफाई करके देते हैं आपको, ताकि चेस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद में ही रहे और आपका सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में भी बन जाए. दिस विल बी a win-win situation for everybody. I hope that the government would make a note of this. And also, sir, ये 2 बेडरूम के घर बनाने का वादा हुआ. सीआईडी इंक्वायरी बोले, इंक्वायरी हो रही है, कब होगी नहीं मालूम, लेकिन इंक्वायरी के चक्कर में अब तक एक भी घर नहीं बना. कब बनेंगे? फ्री एजुकेशन फॉर केजी टू पीजी की बात की गई थी. हम उम्मीद करते हैं कि यह होगा. आई हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स एंड आई ऑल्सो request the government to take effective steps for implementation of Right to Education Act in state, which would ensure the poor children from the neighborhood gets admission in all private schools as matter of right. I may point out the detailed rule have been formulated under the RT Act in state in 2010, and the act should be enforced from ensuing academic year in June 2015. Sir, also the government has announced 43% fitment under pay revision for the government employees. This is a welcome step. We welcome this. कि 43% आपने कहा, और लास्ट असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने ये मुतालिबा किया था कि पीआरसी के रिकमेंडेशन को कब करेंगे. उस पर हमको जवाब नहीं दिया गया, लेकिन असेंबली के सेशन के बाद उनके पीआरसी को बढ़ाया गया. हम इसका इस्तेकबाल करते हैं. उसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि करीब 1,07,000 वैकेंसीज हैं. ये वैकेंसीज कब पूर्ण होंगे? When are we going to fill this more than 1 lakh vacancies, sir? Women constitute 50% of state's population, and they certainly deserve a fair deal. We will extend all support to the government in this endeavor to provide safety, security, social, economic, and educational empowerment to our sisters in the state. Issue of gender discrimination and inequality must be tackled with a firm determination. Besides measures to make Hyderabad a safe city, the government
Governor talks about taking up a number of initiatives to transform Hyderabad metropolis into global hub. However, the initiatives have not been spelled out in Governor's address. Nothing has been mentioned about milestones for completion of Outer Ring Road project, Metro Rail project, MMTS Phase 2, Krishna Water Supply Phase 3, Godavari Water Project, Old City Package, Charminar Pedestrianization Project. We were reading in the newspapers that Old City will very soon become an Istanbul. We are waiting to see when Old City will become an Istanbul. We want that. चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? मैं ये बात कहना चाहता हूं, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर आप ओल्ड सिटी के इकोनॉमिक जोन का खात्मा नहीं कर सकते। बल्दिया की जानिब से ओल्ड सिटी का इकोनॉमिक जोन जो है पत्थरगट्टी से लेकर चारमीनार तक गरीब बंडी वाले डब्बे वाले अपना कारोबार करते हैं, उनके कारोबार से उनकी रोजी रोटी को छीनने की एक मंसूबा बनाया जा रहा है चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के नाम पर। हम खूबसूरती चाहते हैं, उस खूबसूरती के साथ साथ हम रोजगार भी चाहते हैं, बेरोजगार नहीं चाहते हम लोगों को होने के लिए। ऑल्सो मैं ये भी कहूंगा, द गवर्नर एड्रेस हैज फेल्ड टू मेक अ रेफरेंस about the epidemic which was being faced by the people of Hyderabad and entire state of Telangana, that is swine flu. Swine flu में 65 से ज्यादा लोग मर गए हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा नहीं है, 500 करोड़ उस्मानिया हॉस्पिटल को दिया गया, कहां है वो 500 करोड़? गांधी हॉस्पिटल को दिया गया, कहां गया वो पैसा? कितना पैसा लगा? कोई सहूलत नहीं है, पेशेंट्स मर रहे हैं, परेशान है, अवेयरनेस नहीं है। मोर ओवर मैडम, मोर ओवर, if a patient is suffering for swine flu, his blood samples are given for test, we have to wait for 3 to 5 days to receive the report. Why are we not sanctioning more centers to check whether the patient is suffering from swine flu or not? From my hospital, Deccan Medical College, we have applied. It has been more than 2 months and the permission is yet to be granted. Why this attitude? Who are responsible for such an attitude? We wanted to see if any patient from Old City is suffering, they have to go to Narayangoda, one hospital. That's it. And these issues need to be addressed. Governor has assured the government would overcome the shortage of power and provide quality and reliable power to all categories consumers. However, the necessary steps have to be taken to bridge the deficit have not been spelled out. The governor's talk about short-term, medium-term, long-term procurement, new capacity, additional purchase and power from other states and central pool. I would like to point out the power consumers in Hyderabad, especially in Old City, are being subject to frequent power interruption. Apart from these power breaks, down the consumers in the Old City area are harassed by DISCOM and Transco officials who are conducting raids and imposing heavy penalties and alleged pilferage due to power interruptions and owing to failing water levels in response to Sagar Manjara and Singur Reservoir. The water availability is coming down to Hyderabad. I would like to remind the Honorable Chief Minister KCR Saab that he had promised to waive power and water bill areas of the poor families in Hyderabad city. हम जब मिले थे सीएम साहब से, ताईद अपनी दिए थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि पावर बिल और पानी बिल के एरियर्स को माफ करेंगे। आज तक भी नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर भी गौर करेंगे और इस एरियर्स को माफ करेंगे, क्योंकि एरियर्स बहुत ज्यादा है। और सबसे और एक इशू जो बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है वो जीएचएफसी के लिमिट्स में। एज लॉन्ग एज द इलेक्टेड बॉडी वॉज देयर फंक्शनिंग, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया गया, कोई भी ऊपर बोझ नहीं डाला गया। मेरे दोस्त लक्ष्मण साहब ने तफसील से रखा, एक एक बात रखी। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, घरों पर छोटे छोटे घरों पे डाले जा रहे हैं, कमर्शियल बना दिए जा रहे हैं, टैक्स को डाल दिया जा रहा है। क्यों आप आवाम पे बोझ कर रहे हैं? मैं और एक बात कहूंगा, एक तरफ टैक्सेस डालते हैं, एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स है, कन्वर्जन है, दूसरी तरफ लाइट के धावे हैं, बिजली के मीटर्स के हैं, और तीसरी तरफ और एक बात कहूंगा कि रिसेंटली एक जियो आया था जो मेरे पास है। मैं पूछना चाहूंगा आखिर कितना वैट लगाएंगे? रोजाना श्रीनिवास यादव साहब का बयान अखबार में आ रहा, गोल्ड पे वैट, दवाखाने पे इलाज पे वैट, इस पे वैट, उस पे वैट। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा खुदा के लिए आवाम पे बोझ मत डालिए, प्लीज बोझ मत डालिए। अगर आप पेट्रोल को देखेंगे, अगर पेट्रोल को देखेंगे मैडम, तेलंगाना स्टेट वैट is more than 35%, more than 35% in petrol and diesel. लेटेस्ट नया जियो जारी हुआ है 3 दिन पहले, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। 3 दिन पहले जियो जारी हुआ है यहां पर। यस, नो सर, इट वॉज प्रीवियसली 27 as you're saying,
then it was 31% plus 2 rupees. And then it was 22.5% plus 2 rupees. That was 27. Latest due has come, sir, which has come on 5th of February. 5th of February, which says how much? 31%, figure the percentage are 35.20. 35.20. पेट्रोल के लिए 22.25%, डीजल के लिए होकर 27% हो गया। 27 डीजल में और 35.2% पेट्रोल में। और कितना वैट होगा, कितना बोझ डालेंगे? क्या तेलंगाना की आवाम ने इस सुनहरे तेलंगाना के लिए तेलंगाना को हासिल किया? अरे आप बोझ मत डालिए। अगर आप बोझ डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। 125 स्क्वायर यार्ड्स के लैंड को रेगुलराइजेशन की बात की गई, क्या हुआ? मंजलिस अपोज करी उस बात को, क्या कामयाब हुए? नहीं। आपकी 125 स्क्वायर यार्ड्स के रेगुलराइजेशन और दूसरे जमीनात के रेगुलराइजेशन की स्कीम फेल हो चुकी है। हुकूमत नाकाम हो गई इसमें। इसलिए आप जब भी कोई फैसला लेते हैं, आप सोच समझ कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद में करेंगे। और ये भी उम्मीद करूंगा कि पावर टैरिफ का इजाफा नहीं करेंगे बजट के बाद। अगर पावर टैरिफ का भी इजाफा कर देंगे तो फिर जीएचएमसी इलेक्शंस है और कई चीजें हैं। गौर करें, ड्रिंकिंग वाटर तेलंगाना के लिए वाटर ग्रिड की प्रोवाइड करने की बात की गई है, मिशन काकतिया की बात की गई है। ठीक है, अच्छी बातें हम खैर मुकदम करते हैं, इरादा नेक है, लेकिन अमल दरामद है, अमल नहीं हो रहा है। इरादे नेक हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अमल होगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो आज एस्केलेट होती जा रही हैं। कॉस्टिंग कब होगा ये? और फिर ये भी कहूंगा, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का हुकूमत ने वादा किया 1 लाख एकड़ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कब होगा? मैं चाहता हूं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर एक व्हाइट पेपर को जारी करना चाहिए हुकूमत को, so that we would know what exactly is happening. IT sector also, madam. Bangalore has the total of 31% of share in IT sector. What is our percentage? Our percentage is going down. The IT is coming down. We have to look into this. Power का problem है। और कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड 1.5 करोड़ करें, 75 दिए थे, 75 नहीं दिए, इसके लिए हम आपका खैर मुकदम करते हैं। The governor has referred to certain post-bifurcation issues which remains unresolved, particularly with regards to allocation of water and power. The government, we are told, is making all effort to resolve these issues amicably through process of dialogue. We welcome this and hope that the government of Telangana and the state of the AP would act responsibly and ensure these outstanding issues are resolved without any hassle. Telangana lawyers who were in forefront in the movement of separate Telangana have agitated for separate high court. Yes, separate high court should come. लेकिन मैडम डिप्टी स्पीकर, आप सेपरेट हाई कोर्ट के नाम पर ओल्ड सिटी से हाई कोर्ट भी लेके चले जा रहे, ये कैसा है बताइए? सब चला गया पुराने शहर से, एक हाई कोर्ट बचा हुआ है तेलंगाना के हाई कोर्ट के नाम पर। अगर आज हाई कोर्ट चला जाएगा और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट ओल्ड सिटी में रहेगा तो फिर गया सो वापस आता नहीं। मैडम कहां से आएगा? आप तेलंगाना के लिए सेपरेट हाई कोर्ट लाइए जरूर, हम भी उसमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के लिए सेपरेट हाई कोर्ट की बिल्डिंग आप दीजिए, लेकिन तेलंगाना का हाई कोर्ट ओल्ड सिटी में ही रहना चाहिए, ओल्ड सिटी में ही रहना चाहिए। ये बात हम कहते हैं, ये नाइंसाफी होगी पुराने शहर के साथ। इट इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेप द गवर्नमेंट हैज assured that in tune with the spirit of Constitution of India, every resident of Telangana would be extended equal treatment without any prejudice. No discrimination would be shown to the residents who hail from Seema Andhra but are settled in Hyderabad and other parts of Telangana. और ये भी बात है, मैं इसका खैर मुकदम करता हूं, औकाफी जायदादों का मामला है कि कई तबाहियां हो रही हैं औकाफी जायदादों पर, और कई सेकंड सर्वे की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, और भी दूसरे कई मसाइल हैं। इंशाल्लाह फिर मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक उम्मीद है हुकूमत की तरफ जो अवाम देख रही है। सुनहरे तेलंगाना की तवक्को में तेलंगाना को हासिल किया, लोग इंतजार कर रहे हैं क्या जो मकसद के लिए हमने तेलंगाना को हासिल किया, क्या वो तेलंगाना हमको देगा या नहीं, क्या रोजगार मिलेंगे या नहीं, क्या बेरोजगारी दूर होगी या नहीं होगी, क्या हमारी माशी हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे, क्या हमको घर मिलेंगे या नहीं, क्या हमारे तेलंगाना में तरक्की आएगी या नहीं। इसी तरीके से मुसलमान भी देख रहा है आपकी तरफ। मैंने जितना हो सकता है आपको आगाह किया, आपके सामने आदत शुमार रखे, तफसीलात रखे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और यह भी तवक्को करूंगा कि
فائنانس کمیشن میں جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس پر حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہوئے ایک ریزولوشن کو موو کرتے ہوئے ہماری ناانصافیاں جو ہمارے اسٹیٹ کے ساتھ ہوئی ہیں اس کو انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے جو بھی جدوجہد کرے گی ہماری پارٹی حکومت کے ساتھ ہے. اور محترم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ, آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا ممنون ہوں, آپ کا مشکور ہوں, شکریہ. Outstanding issues with regards to various schemes. Before going into that, میں چیف منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایس سیز بی سیز کے لیے سب کے لیے اسکالرشپ کے لیے کمیٹی بنائی گئی, فارمز داخل کرنے کی تاریخ کھولی گئی اور سارے اسٹوڈنٹس نے درخواستیں اپنی ڈال دی ہیں ایس سی ایس ٹی اور بی سیز کی اسکالرشپس کے لیے, لیکن آج تک بھی مائنورٹی اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کی درخواست ڈالنے کے لیے ابھی تک کھولا نہیں گیا. تو آخر کب ہوگا اور کیا یہ سال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے بار بار ایک ہی مطالبہ کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں, آپ ان معصوم بچوں کے مستقبل کا سوچ کر ان کی اسکالرشپس کو نہ روکیے. کالج والے ان کو ہراساں کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹس نہیں دے رہے ہیں, ایگزامینیشنز لکھنے نہیں دے رہے ہیں, لیکن آج ان ساری صورتحال کے باوجود بھی ہم کو امید ہے کہ آپ کچھ کریں گے ان بچوں کے لیے. لیکن آج یہ سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں اور مائنورٹیز کے لیے اتنا بڑا بجٹ دینے کے باوجود بھی 50% بجٹ بھی ریلیز نہیں کیا گیا. تو اس میں کس طریقے سے, جیسے کہ اسکالرشپس ہے, فی ریمبرسمنٹ ہے, فاسٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن مائنورٹیز کے ساتھ وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. تو ہم کو امید ہے انصاف کیا جائے گا, لیکن کب کیا جائے گا یہ سوال ہے کہ 9 مہینے میں ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کے اسکالرشپ کی درخواستوں کے لیے کھول دیا گیا تھا, لیکن مائنورٹیز کا آج تک نہیں کھولا گیا. تو آخر یہ گورنمنٹ اپلیکیشنز کو انوائٹ کب کرے گی؟ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ فیس ریمبرسمنٹ رینیول آف کرنٹ اینڈ ایکیڈمک اینڈ فائنینشیل ایئر, آخر یہ کب ہوں گے؟ فائنینشیل ایئر ختم ہونے پر آ رہا ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ فوراً آپ اپلیکیشن انوائٹ کرنے کے پروسیس کا آغاز کریے پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے, اور وہ کالجز جن کو فیس نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے بچے اور مینجمنٹ پریشان ہیں, ان کے فیس کی اجرائی فوراً عمل میں لائیے. جو پروفیسر کالج اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کریں کنوینئر کوٹا میں فار ایس سی ایس ٹی اینڈ بی سی مائنر اسٹوڈنٹ بلو پاورٹی لائن میں, ان کے فیس آج تک نہیں آئے ہیں. گائیڈ لائنز فریم کرنا ہے, کب گائیڈ لائنز فریم ہوں گے, کب ہوگا آخر یہ؟ ہم حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ کریں گے تو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ فیس ریمبرسمنٹ فریش رینیول فار اسٹوڈنٹس آف کرنٹ ایکیڈمک ایئر وڈ بی پیڈ بفور دا کمنسمنٹ آف نیکسٹ ایکیڈمک ایئر. نیکسٹ ایکیڈمک ایئر کے آغاز سے پہلے آپ ان کے فیسز کی اجرائی کر دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی. The state government has announced the fresh guidelines and the target for providing subsidy on bankable loans for SC, STs and BC. However, no guidelines have been framed for the subsidy schemes for minorities. SC, STs, BCs کے لیے گائیڈ لائنز ہو چکے ہیں, مائنورٹیز کے لیے نہیں ہوئے. تو پھر یہ بھی کب ہوگا, یہ سوال ہے. لوگ ہم سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت کا تعاون کیا, ان کے الائی پارٹنر ہے, اپنی تائید دی, تو پھر یہ مسلمانوں کے یہ مسائل آخر کب حل ہوں گے؟ ہمیں آج بھی امید ہے, ہم اپنی امید کو نہیں کھوئے ہیں, ہم کو امید ہے کہ برابر ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ کب ہوگا. ایس سی ایس ٹیز کو کھول دیا گیا لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا, اور subsequently no subsidy on bankable loans is likely to be sanctioned during the current financial year as no fresh applications are invited in absence of revised guidelines for minorities. Budget release are merely sufficient to pay the pending sanction application pertaining to last financial year 2013 and 14. I would like the government to formulate the guidelines immediately and call for application for subsidy on bank loans. The target under Shadi Mubarak is unlikely to be achieved, though conditions are causing problems to applicants. These conditions needs to be relaxed. Moreover, madam, relax ke saath saath 2 din pehle ek naya GO aaya. I don't know whether Honorable Chief Minister is aware of this. On 9th, one order has been issued by Government of Telangana, Commissioner of Minority Welfare Telangana, press note. It says, all the Shadi Mubarak applicants who have registered online and having zero balance bank accounts are requested to convert zero balance account into saving bank accounts.
being zero bank account is not accepting for transfer of Shadi Mubarak amount of 51,000 at the time of their account. पहले बोले उनको एक अकाउंट खोलो, अब बोल रहे हैं दूसरा अकाउंट खोलो, तो कैसे होगा? और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात पर भी लाना चाहता हूं कि गवर्नर साहब के एड्रेस पे 15 पॉइंट प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का है, जो बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं, इस ताल्लुक से एक लफ्ज भी नहीं हुआ. ठीक है, गवर्नर एड्रेस पे सारी चीजें आनी जरूरी नहीं है, बात चीजें छूट जाती हैं, लेकिन 9 महीने में एक मीटिंग भी हुकूमत की जानिब से 15 पॉइंट प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाई गई. मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब फिर 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आज अगर आप 1000 करोड़ देंगे या 2000 करोड़ भी देंगे, तो 2000 करोड़ को खर्च करने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है. आज बीसी कॉर्पोरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट में 2998 स्टाफ है, एससी में 8508 एम्प्लॉइज हैं, ट्राइबल वेलफेयर में 10607 एम्प्लॉइज हैं. टोटल ये 3 डिपार्टमेंट्स में 22,123 हैं. और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ 100 एम्प्लॉय हैं, सिर्फ 100. तो आप बताइए 100 से 1000 करोड़ कैसा खर्चेंगे? वो एक ही ऑफिसर को शादी मुबारक की इंक्वायरी करना है, वो एक ही ऑफिसर को स्कॉलरशिप की इंक्वायरी करना है, वो एक ही ऑफिसर को फॉर्म भी देना है. कैसे होगा ये? यही तो नाइंसाफियां हुई हैं कांग्रेस हुकूमत की जानिब से या फिर तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से. और इन नाइंसाफियों को इंसाफ में तब्दील होते हुए हमको उम्मीद है कि यहां आपकी हुकूमत में होगा, लेकिन आज वो चीजें भी नहीं हो रही हैं. The government has recently constituted a commission under the Commission of Inquiry Act for going into entire grants of issue relating to increase in reservation for Muslims to 12%. However, this fact has not been mentioned in governor's address. But we welcome this. When we welcome this, at the same time, one important thing needs to be addressed and understood by the government. An IS officer is deputed and given the responsibility of collecting the data. How can an IS officer do justice to this? आप अगर वाकई में अगर कुछ करना चाहते हैं, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाकर बनाइए उसका मेंबर, उनको जिम्मेदारी दीजिए. अगर एक हाई कोर्ट जज जिम्मेदार होगा तो लीगल इश्यूज के बारे में वो वाकिफ होगा, कानून में किस तरीके से हमारे इस मुतालबे को मनवाया जा सकता है वो ज्यादा जान सकते हैं. कानून में कौन सी कमजोरी है जिसको हमको दबाकर उसको मजबूत करना है, एक रिटायर्ड जज बेहतर जान सकता है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं कर सकता इस बात. लेकिन एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को कमीशन में डाल दिया गया. मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं कि एक जमाने में पुट्टुस्वामी कमीशन भी बनाया गया था. पुट्टुस्वामी कमीशन 10 बरस तक इंक्वायरी कर रहे थे, 10 बरस तक. मैं उम्मीद करता हूं कि यह कमीशन ने बहुत एहतजाज करे थे तेलंगाना को हासिल करने के लिए. 2009 से वो मेस चार्जेस नहीं दिए हैं. 7 करोड़ है साहब उनके, only 7 crores. Only 7 crores are the mess charges which are due by the students of Osmania University. Kindly waive that this 7 crores, sir. Kindly waive this. तो एक तरफ आंध्रा वाले भी खुश होंगे, तेलंगाना एजुटेशन करने वाले तेलंगाना के बच्चे भी खुश होंगे. अच्छी बात है. इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप चेस्ट हॉस्पिटल को, अगर शहर हैदराबाद में जमीन नहीं है तो पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल को लेकर आइए, हम जमीन देंगे, हमारे पास जमीन है, यहीं पर रहने दीजिए हैदराबाद में चेस्ट हॉस्पिटल को. वखाराबाद में हॉस्पिटल है, वहां पे एक रहेगा. ये कुकटपल्ली का हॉस्पिटल को पुराने शहर में लेकर आइए, हम जमीन आइडेंटिफाई करके देते हैं आपको, ताकि चेस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद में ही रहे और आपका सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में भी बन जाए. दिस विल बी a win-win situation for everybody. I hope that the government would make a note of this. And also, sir, ये 2 बेडरूम के घर बनाने का वादा हुआ. सीआईडी इंक्वायरी बोले, इंक्वायरी हो रही है, कब होगी नहीं मालूम, लेकिन इंक्वायरी के चक्कर में अब तक एक भी घर नहीं बना. कब बनेंगे? फ्री एजुकेशन फॉर केजी टू पीजी की बात की गई थी, हम उम्मीद करते हैं कि यह होगा. आई हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स एंड आई ऑल्सो request the government to take effective step for implementation of Right to Education Act in state, which would ensure the poor children from the neighborhood
gets admission in all private schools as matter of right. I may point out the detailed rule have been formulated under the RT Act in state in 2010, and the act should be enforced from ensuing academic year in June 2015. Sir, also the government has announced 43% fitment under pay revision for the government employees. This is a welcome step. We welcome this. कि 43% आपने कहा, और लास्ट असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने ये मुतालिबा किया था कि पीआरसी के रिकमेंडेशन को कब करेंगे, उस पर हमको जवाब नहीं दिया गया, लेकिन असेंबली के सेशन के बाद उनके पीआरसी को बढ़ाया गया, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि करीब 1,07,000 वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज कब पूर्ण होंगे? When are we going to fill this more than 1 lakh vacancies, sir? Women constitute 50% of state's population, and they certainly deserve a fair deal. We will extend all support to the government in this endeavor to provide safety, security, social, economic, and educational empowerment to our sisters in the state. Issue of gender discrimination and inequality must be tackled with a firm determination. Besides measure to make Hyderabad a safe city, the governor talks about taking up a number of initiatives to transform Hyderabad metropolis into global hub. However, the initiatives have not been spelled out in governor's address. Nothing has been mentioned about milestones for completion of Outer Ring Road project, Metro Rail project, MMTS Phase 2, Krishna Water Supply Phase 3, Godavari Water Project, Old City Package, Charminar Pedestrianization Project. We were reading in the newspapers that Old City will very soon become an Istanbul. We are waiting to see when Old City will become an Istanbul. We want that. चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? मैं ये बात कहना चाहता हूं, चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर आप ओल्ड सिटी के इकोनॉमिक जोन का खात्मा नहीं कर सकते। बल्दिया की जानिब से ओल्ड सिटी का इकोनॉमिक जोन जो है पत्थरगट्टी से लेकर चारमीनार तक गरीब बंडी वाले डब्बे वाले अपना कारोबार करते हैं, उनके कारोबार से उनकी रोजी रोटी को छीनने की एक मंसूबा बनाया जा रहा है चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर। हम खूबसूरती चाहते हैं, उस खूबसूरती के साथ साथ हम रोजगार भी चाहते हैं, बेरोजगार नहीं चाहते हम लोगों को होने के लिए। ऑल्सो मैं ये भी कहूंगा, द गवर्नर एड्रेस हैज फेल्ड टू मेक अ रेफरेंस about the epidemic which was being faced by the people of Hyderabad and entire state of Telangana, that is swine flu. Swine flu में 65 से ज्यादा लोग मर गए हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा नहीं है। 500 करोड़ उस्मानिया हॉस्पिटल को दिया गया, कहां है वो 500 करोड़? गांधी हॉस्पिटल को दिया गया, कहां गया वो पैसा? कितना पैसा लगा? कोई सहूलत नहीं है, पेशेंट्स मर रहे हैं, परेशान है, अवेयरनेस नहीं है। मोर ओवर मैडम, मोर ओवर, if a patient is suffering from swine flu, his blood samples are given for test, we have to wait for 3 to 5 days to receive the report. Why are we not sanctioning more centers to check whether the patient is suffering from swine flu or not? From my hospital, Deccan Medical College, we have applied. It has been more than 2 months and the permission is yet to be granted. Why this attitude? Who are responsible for such an attitude? We wanted to see if any patient from Old City is suffering, they have to go to Narayangoda, one hospital. That's it. And these issues need to be addressed. Governor has assured the government would overcome the shortage of power and provide quality and reliable power to all categories consumers. However, the necessary steps have to be taken to bridge the deficit have not been spelled out. The governor's talk about short-term, medium-term, long-term procurement, new capacity, additional purchase and power from other states and central pool. I would like to point out the power consumers in Hyderabad, especially in Old City, are being subject to frequent power interruption. Apart from these power breakdowns, the consumers in the Old City area are harassed by DISCOM and TRANSCO officials who are conducting raids and imposing heavy penalties and alleged pilferage due to power interruptions and owing to failing water levels in Usman Sagar, Manjara and Singur Reservoir. The water availability is coming down to Hyderabad. I would like to remind the Honorable Chief Minister KCR Saab that he had promised to waive power and water bill areas of the poor families in Hyderabad city. हम जब मिले थे सीएम साहब से, ताईद अपनी दिए थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि पावर बिल और पानी बिल के एरियर्स को माफ करेंगे। आज तक भी नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर भी गौर करेंगे और इस एरियर्स को माफ करेंगे, क्योंकि एरियर्स बहुत ज्यादा है। और सबसे और एक इशू जो बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है वो जीएचएफसी के लिमिट्स में। एज लॉन्ग एज द इलेक्टेड बॉडी वॉज देयर फंक्शनिंग, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया गया, कोई भी
ऊपर बोझ नहीं डाला गया। मेरे दोस्त लक्ष्मण साहब ने तफसील से रखा, एक एक बात रखी। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, घरों पर छोटे छोटे घरों पे डाले जा रहे हैं, कमर्शियल बना दिए जा रहे हैं, टैक्स को डाल दिया जा रहा है। क्यों आप आवाम पे बोझ कर रहे हैं? मैं और एक बात कहूंगा, एक तरफ टैक्सेस डालते हैं, एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स है, कन्वर्जन है, दूसरी तरफ लाइट के धावे हैं, बिजली के मीटर्स के हैं, और तीसरी तरफ और एक बात कहूंगा कि रिसेंटली एक जियो आया था जो मेरे पास है, मैं पूछना चाहूंगा आखिर कितना वैट लगाएंगे? रोजाना श्रीनिवास यादव साहब का बयान अखबार में आ रहा, गोल्ड पे वैट, दवाखाने पे इलाज पे वैट, इस पे वैट, उस पे वैट। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा, खुदा के लिए आवाम पे बोझ मत डालिए, प्लीज बोझ मत डालिए। अगर आप पेट्रोल को देखेंगे, अगर पेट्रोल को देखेंगे मैडम, तेलंगाना स्टेट वैट इज मोर देन 35%, मोर देन 35% इन पेट्रोल एंड डीजल। लेटेस्ट नया जियो जारी हुआ है 3 दिन पहले, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, 3 दिन पहले जियो जारी हुआ है यहां पर। यस, नो सर, इट वॉज प्रीवियसली 27 as you're saying, then it was 31% plus 2 rupees. And then it was 22.5% plus 2 rupees. That was 27. Latest Jio has come, sir, which has come on 5th of February. फिर एक 10 बरस तक नहीं बैठेगा, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है वो देंगे. And also there are issues with regard to other schemes for various sections of people. There are thousands of widows, age pension and disabled pension, persons who are yet to get the enhanced Asara pension. The government should have continued the existing pensions in enhanced assistance of 1,000 per beneficiary, take up scrutiny to weed out bogus beneficiaries. However, the existing pensions are scrapped and application of fresh pension under revised guidelines are invited. And this is causing problems, since the existing pensioners have been denied their meager pension of rupees 200 per month, while thousands of applications have been rejected or await scrutiny. Aged persons, widows and disabled persons have lost their existing pension, are running from pillar to post, awaiting fresh pension. Their plight is very pathetic and very sad. The government must restore pensions to all pensioners. And one more injustice which has been done to the minorities in the state of Telangana. शायद चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं, मेरी इन बातों को तनकीद की शक्ल में न लें, एक तामीरी तनकीद की शक्ल में लें. I mean to say that my criticism should not be taken as a criticism to the government, but should be taken as a constructive criticism. We are the friend of the government, but if you have to see the details, sir, Honorable Chief Minister, sir, the total life pensioners, and these are not my figures, these are the figures of the website. The total life pensioners are 30,76,892. I repeat, 30,76,892. And the share of minority pensioners in 30,76,000 is only 41,230. Out of 30 lakhs, only 40,000. हमसे लोग पूछ रहे हैं, आप हुकूमत की तायीद कर रहे हैं, और क्या मिला? शायद चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम. और अगर परसेंटेज देखते हैं, if we have to see the percentage of the total life pensioners, the percentage of minorities is 1.34% only. 1.34, sir. तो आप बताइए, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या इस पर इंसाफ का मुतालबा हम जो कर रहे हैं क्या गलत है? आज ये सारी बातें, बेशक हम जानते हैं कि आपको मसाइल हैं, आप हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं हालात को, जायजा ले रहे हैं, स्टाफ नहीं था, कई मसाइल है तेलंगाना के सामने, लेकिन ये नाइंसाफी जो हम आपके सामने ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पे इंसाफ हो. अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर वही होगा जो कांग्रेस और तेलुगु देशम वालों ने हम मुसलमानों के साथ किया. हमें उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे. Thousands of households have been left out under intensive household survey. Samagrana Kundama survey in state, particularly Hyderabad city, the household data is thus incomplete, causing problems in processing application for pension, food security cards and other benefits. The leftover households were to be covered subsequently, but this has not been done, leaving the officials with incomplete data. The uncovered household run the risk of losing out on benefits under various welfare schemes. The survey must be completed for the leftover household. The food security cards,
to replace the ration cards are yet to be given to poorer families. The applications are invited months ago. The proper process of identifying the families for issuance of food security card is yet to be completed. Instance of linking the food security card with Aadhaar card is causing problems. This is causing problems. Unless there is 100% coverage of all residents, household under Aadhaar scheme, there is no reason to link these cards with the welfare schemes. While issuing the food security cards is unfair to leave out the members whose Aadhaar details are not available. This is a devious way of reducing the quantum of subsidy rice to poor families by deleting the names of members of those Aadhaar details are not furnished, raising where the quantum of rice to 6 kgs per capita has no meaning if the households are provided rice for only those whose names are linked in Aadhaar cards. I have the details. I'll give it the details in the budget speech. I understand that allocation and mark for a CSD sub-plan have been fully released. The schemes for providing 3 acres of arable land to landless poor Dalit is yet to take off. The government must identify the beneficiary and acquire and assign the lands to them immediately. Please conclude. Madam, I just need 15 minutes more, madam. I request, madam. Sir, about this 3 acres of land to Dalits, it's a very good, we welcome that. 3 lakhs Dalits are there. 3 acres would be given. 9 lakh acre of land is required. We are spending money in purchasing the land to allot to Dalits. And again, the government has the plans on other side to sell the government lands. Sir, now I said I don't know how the government would do. I wish them all the best for this. But at the same time, I would like to make a request is that when you're giving this to Dalits, kindly give not 3 acres, at least 1 acre to a Muslim farmer also. Please do not forget them also. I'm not asking for 3 acres. I'm asking for 1 acre. And I hope that you would do this. The government has recently constituted an inquiry commission to go into the issue raising the reservation for STs to 12% of the state. This will help the government fulfill on a key poll promises. I request the government to implement the scheme for providing pensions to weavers in Karimnagar and other districts and assistance to beedi workers in Nizamabad and other places. Beedi workers. काफी वो लोग एहतजाज कर रहे हैं. इसके लिए मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप एक मीटिंग बुलाएं. बीडी वर्कर्स की जब मैं बात करता हूं तो यह भी कहूंगा कि हुकूमत ने यह भी मुतालबा किया था बोधन शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक से. डीबीआर मिल बंद हो गई और हालिया अरसे में 4-5 महीने से सिरपुर कागज नगर की मिल भी बंद हो चुकी है. HCL भी बंद होने वाली है कह रहे हैं. हजारों लोग बेरोजगार होंगे. इसके लिए भी हुकूमत को सोचना चाहिए. सिरपुर कागज नगर के वो लोग मिल के वो मुलाजिमीन परेशान हैं. वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो. कई हुकूमत साबिका हुकूमतों ने तो मिल्स को बंद कर दिया, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, उनके जमीनात को बेच दिया. उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा. द गवर्नर एड्रेस में यह बात पर भी खामोशी है. हम अखबारात में पढ़ें कि सेक्रेटेरिएट शिफ्ट होगा, चेस्ट हॉस्पिटल को जाएगा. गवर्नर एड्रेस में उस पर भी कोई बात नहीं की गई. नया बनता है, बहुत अच्छा है. एक ऑलिव ब्रांच दी जा रही है आंध्रा के लोगों को. एक आंध्रा के लोग जो कुकटपल्ली और उस एरिया में रहते हैं, उनको यह पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी हुकूमत आपके साथ भी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में आएगा तो आंध्रा के लोगों को बहुत फायदा होगा. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, होने दीजिए, करना चाहिए. चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा कि सेटलर भी नहीं पुकारना चाहिए. बहुत अच्छा है, करिएगा. हम आपको मुबारकबादी देते हैं कि आंध्रा के लोगों के बारे में आप इतना सोचते हैं. एक वक्त ऐसा भी था कि आंध्रा वालों को जाने की बात कही गई. अब यह वक्त भी आया है सुनहरा तेलंगाना में कि आंध्रा वालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट चेस्ट हॉस्पिटल में ला रही है. बहुत अच्छा है, हम इसका खैर मुकदम करते हैं. इसके साथ एक छोटा मुतालबा करते हैं. उस्माना यूनिवर्सिटी के बच्चे जो तेलंगाना एजुकेशन. Honorable Deputy Speaker, Madam, we welcome the Governor's address to the Telangana State Legislature. It is the second such address of the Governor after the historic formation of the Telangana State in June last year. The Telangana government has completed 9 eventful months in office in the state.
The first anniversary of the formation of the new state will be celebrated on 2nd of June. The Honorable Governor has reviewed some achievements of the new state since June 2014, beside reiterating the priorities, policies, programs and schemes of the TRS government under K. Chandrasekhar Rao Sahab's leadership for the development of the state and for the welfare of different sections of people in the last 9 months. We are fully aware that the state is going through teething problems, troubles, compounded by inadequate staff and delay in allotment of all India services officers, severe shortage of power, deficient rainfall, water scarcity, financial crunch, and other issues. The government has tried to tackle these problems. The governor's speech this time sounds very much like the first speech after the Telangana state formation in June 2014, because at different places, the governor continues to refer to the next 5 years. Though 1 year has almost over, he must have referred to the next 4 years, leaving aside the year that is coming to close. Though we would know the real state of state finances when the state budget is presented in the legislature on the 11th of March, we have been provided reassuring figures of the state economy growth during the current financial year. We were told that the GSDP growth for the fiscal 2014 and 15 would be around 5.3% with momentum in industrial and service sector. That we are told that the GSP growth of fiscal 2014 and 15 would be around 5.3%. With momentum in industrial and service sector that effectively offset the decline in agricultural growth due to adverse monsoon, the per capita income has crossed the rupees 1 lakh, and it is likely to be rupees 1,03,889 in the current financial year. This is a matter of satisfaction for our state. However, these statistics trotted out by the Director of Economics and Statistics could be tricky because these are the advanced estimates prepared by the officials, though the financial year would be over in next 3 months. The service sector and industrial sector, I'm afraid, have not grown at the rate indicated, and there have been negative growth in the agricultural front also. The Rabi crop has been affected due to fall in groundwater table and surface water availability owing to deficient rainfall. It is strange that the governor's address had no reference whatsoever to the raw deal being meted to the Telangana state by the central government, either under the 14th Finance Commission grants or under the union budget, even while ignoring the state government request for according special category status to Telangana state. The central government is curtailing central assistance for various schemes, and this is a very important issue which has not been addressed in the governor's address. Before I go into the specifics of the Honorable Governor's address, I would like to highlight some of the issues that would have long-lasting impact on the state finances in its budgetary spending in the 13th Finance Commission recommendation, as well as proposal containing the union budget for the 2015 and 16, presented by the Union Finance Minister Arun Jaitley in the Parliament, are going to adversely affect the Telangana state finances and its ability to implement the welfare programs and developmental activities. First, I would like to refer to the recommendation of 15th Finance Commission, which have been accepted by Union Government in toto. In additional terms, to reference of 14th Finance Commission was to take into account the resources available to the successor states on reorganization of state of AP and make recommendation of successor states. However, the recommendation of the 14th Finance Commission with regards to Telangana state, AP seems to be weighted in favor of AP at the expense of Telangana state. At the expense of Telangana state, basing on the projection of pre-devolution revenue deficits made by the AP state, the 14th Finance Commission has included AP among the 11 states for whom grant in aid to cover revenue deficit has been suggested. AP stand to get grant in aid of rupees 22,113 crores to cover its revenue deficit. However, no grant in aid for Telangana has been suggested on the ground the state is revenue surplus. No grant. And further, in 14th Finance Commission has suggested the cut in Telangana state share for central taxes.
divisible pool from 2.91% to 2.48%. The AP share has been raised to 4.30%. This is unfair because the collection of central taxes and duties including corporation tax, income tax, custom duty, union excise duty, service tax, other tax and duties are far higher in Telangana compared to Andhra Pradesh. But still, and if I have to give the details, madam, the approximate taxes collected by the government of India from Telangana is approximately 40,000. Out of 40,000, the Telangana gets only 12,823. The taxes collected by Andhra Pradesh is less than 30,000. It's less than 30,000 and they are getting 22,638 crores. And if I have to give the figure of special grants recommended by 14th Finance Commission in various heads, that is basic grant, rural local bodies, urban local bodies, performance grant, rural local bodies, urban local bodies, state disaster response fund, SDRFs, central share, special grant, judiciary, demands for grants and aids. The total amount allocated for Andhra Pradesh would be 1,56,204.24 in next 5 years. And the share of Telangana in this would be only 31,286.82. Only 31,000. And the governor's address is quite on this important issue. And I would like to know when the Honorable Chief Minister is going to reply. What are the initiatives the state government is taking to the injustice that has been given to the state of Telangana? This is a very serious matter. So, and to go more further in this, the Telangana state also get lesser amount towards basic grants and performance grants recommended for rural and urban local bodies as well as state disaster response fund and special grants for upgradation of judicial administration and all. AP works out to 1,69,969 crores in the total central divisible pool of rupees 39,48,187 crores in next 5 years. The share of Telangana is far less, not even 96,000 crores. This is a matter of serious concern for all of us. And I've been hearing all my leaders, but none has mentioned this serious issue, which needs to be addressed immediately. In the Union Budget 2015-16 presented by Union Finance Minister Arun Jaitley, in the Parliament, AP has been provided with rupees 22,638 crores towards its share of union taxes and duties. Telangana gets only 12,000. And normal plan assistance, externally aided project, centrally sponsored scheme, apart from non-plan grants and loan, the Planning Commission has abolished and Niti Aayog has been constituted from 1st of January 2015. The TRS government has welcomed the formation of Niti Aayog. We have welcomed and this is what we have got. We need to address this issue. And an analysis on the Union Budget 2015 and 16 of central government for budget and governance accountability New Delhi points out the deeper examination of amounts of increased devolution. 42% of the divisible central taxes recommended by 14th Finance Commission provides a clear picture of the status of overall resources being transferred to the state. The Union Budget categorically stated that due to higher devolution of taxes of the state, the normal central assistance, special plan assistance, specific central assistance, and additional central assistance for other purposes are included in 14th Finance Commission award itself. Thus, 8 schemes have been discontinued. 8 schemes. And some central sponsored schemes would be implemented with a change pattern of sharing resource with the state to contribute higher shares. Higher shares. The schemes to be discontinued by central include backward region grant funds. Backward region grant funds. How many districts are backward? And how many districts were getting the central assistance? And by this discontinuation, what will happen to the backward regions and the districts of Telangana is a question mark. And modernization of police forces will not get any funds. Rajiv Gandhi Panchayat Sastika Abhiyan will not get any funds.
scheme for setting up 6,000 model school, national mission on food processing, tourism infrastructure, national e-governance plan, and scheme for developing export infrastructure will get no grants from the government of India. So now the question is, I may point out that all the 9 rural districts of Telangana state are currently covered under BRGF. If the BRGF goes, what would happen to the schemes implemented in the 9 districts of Telangana? Is a question mark which needs to be answered. And what would happen to the other schemes for the opening schools, e-governance, modernization of police forces, etc. My friend of Panchayat Raj, Rural Development and IT Minister Mr. K.T. Ramara must be seriously concerned over the scrapping of BGRF and e-governance scheme. This is a very serious thing. Moreover, the UN government would bear only capital expenditure of 24 central schemes, and the remaining expenditure would be borne by these states. These include schemes relating to cattle, horticulture, livestock, sustainable agriculture, Daring Rashtriya Krishi Vikas Yojana, veterinary services, national rural drinking water program, Swachh Bharat Abhiyan in rural urban areas, afforestation, AIDS control, national admission, national urban livelihood mission, Rashtriya Madhvika Sakshi Abhiyan, Rashtriya Ucha Shiksha Abhiyan, national rural livelihood mission, housing for all, integrated child development services, micro irrigation, and etc. Thus the burden on the state for implementing all these central schemes would be much higher in view of precarious financial position of the Telangana state. The TRS government would be really hard pressed to find additional resources to meet the share of expenditure of these schemes. Most of the ministry and the department would find it difficult to implement these schemes in absence of adequate central financial assistance. I would like the Honorable Chief Minister, Mr. KCR Saab, and the Finance Minister, Ranjan Saab, to tell us how they are going to overcome these financial constraints, what would happen to various developmental programs and welfare schemes which were largely funded by the union government. All the major programs and schemes implemented by the state government are dependent on union government, and can the government give an assurance that these schemes would not be curtailed? Apart from these issues, the central resource transfer under non-plan and plan of the state, I would like to point out that the union government has been silent and on genuine and justifiable demand of Telangana state for special category status, higher quantum of central assistance, including a Paranahita Chavalla project as a national project, incentive for industrial development and grant for state schemes such as Mission Kakatiya and drinking water grid and mega power project, etc. Justice has not been done to Telangana state, either by the 14th Finance Commission or the union budget. I demand that we must exert pressure on the union government to give us a real deal under 14th Finance Commission grant, restore the allocation for central schemes and accord special category status to Telangana state. This is very important. I request the Honorable Chief Minister to move a resolution in this August House for increase of state share in devolution under 14th Finance Commission to provide adequate allocation for central schemes and confer the special category status for Telangana immediately. The governor has recounted various programs launched by the government for the welfare of disadvantaged sections. These include the increased allocation of SC, STs, BCs. The governor has reiterated the TRS government's commitment to the welfare of minorities, which continues to suffer from several constraints. Apart from allocation of rupees 1,000 crore in current year, the governor has assured that the government would earmark 1,000 crore every year for their welfare. The Shadi Mubarak scheme has been introduced to provide 51,000 assistance to minority girls and marriages. And then the governor has referred of Ganga Jamna Tehzeeb culture by pointing out that Telangana is strategically located in providing ideal ground for different cultures, religious belief as well as languages. The government has assured to preserve the diverse culture aspiring of the people, especially the minorities, to allocate resources to the end of the state budget. The governor says that benefits such as scholarships, coaching for civil exam, etc. are being provided by a government under multi-sector developmental program. A central scheme, comprehensive development is planned and blocked in preponderance of minorities in Nizamabad and Medak district. I would like to recall that out of the allocation of 15 crores for this scheme, rupees 7.5 crores have been released on January 5th this year, and the balance amount of 7.4 crore is to be released
before 31st of March. The government has released rupees 437 crores for minorities. That is less than 50% of the total allocation for the minorities. So far, the Finance Department would need to release the balance allocation of 596 crores in next 3 weeks before the financial year comes to a close. We do not know whether the state's precarious financial position would permit the government to release the balance funds for the minority welfare before 31st of March. There are some